hayati diyor.
हेलो एवरीवन। हाय गाइस, सुन पा रहे हो आप लोग मुझे? अच्छा, आई थिंक कि अभी मैंने आप लोगों का माइक का एक्सेस लिया हुआ है। सो अभी एक काम करते हैं, मैं आप लोगों को माइक का एक्सेस दे देता हूँ फॉर नेक्स्ट 2 मिनट्स, ताकि आप लोग जो बोलना चाहते हो बोल लीजिए। देन उसके बाद फिर एक्सेस हम ले लेंगे ताकि सेशन हम स्मूथली कर पाए। सो माइक का एक्सेस मैंने आपको दे दिया है। बताओ कैसे हो सब लोग? हेलो सर। गुड बहुत अच्छा इवनिंग सर। सर। I am good, sir. How are you? गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड सर, फाइन सर। गुड इवनिंग सर। कैसे हैं सब? गुड इवनिंग। बहुत राम बढ़िया, राम जी। बहुत गुड बढ़िया। इवनिंग सर। राम राम जी, राम बढ़िया। राम। राम राम जी फाइन सर, सर, राम गुड राम। इवनिंग सर। बढ़िया राम बढ़िया, गुड राम इवनिंग राम राम। जी, सर। सबको राम राम। ठीक है। राधे राधे। राम बढ़िया राम भाई बढ़िया, सारे। सीताराम सर, सीताराम। सबको राम राम, सत श्री अकाल, राधे राधे, सब कुछ जो आप लोग जानते हो सबको हेलो हाय उसी भाषा में। ठीक है। हाउ अच्छा आर यू देखो, सर? बढ़िया एकदम सर, आप कैसे हैं? बढ़िया सर। क्या बात है, सर ये फर्स्ट शाबाश। लेक्चर है। नहीं, ये फर्स्ट लेक्चर नहीं है, सेकंड लेक्चर है। वही मैं बताने वाला हूँ कि हम फर्स्ट लेक्चर जो है उसका हम एआई और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कर चुके हैं, जहाँ हमने देखा था कि इसके बेसिक्स क्या हैं और थोड़ा सा उसको थियोरेटिकल लेवल पे समझा था। आज आप थोड़ा सा हैंड्स ऑन करने वाले और थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल यूज करने वाले। सो हमारे साथ जो है वो कंचन सर हैं। सो अब मैं उनको माइक हैंड ओवर कर रहा हूँ, राइट, एंड इसके बाद मैं आप लोगों का माइक का एक्सेस ले लूंगा ताकि हम लोग सेशन स्मूथली कर पाए। फिर लास्ट के कुछ सर 2-3 मिनट के अंदर आप लोगों को दोबारा माइक का एक्सेस दे दीजिएगा। आई होप कि आप लोग जो है कुछ अच्छा सीख कर जाएंगे। ऑलराइट गाइस, हैव अ ग्रेट क्लास। थैंक यू सर। ऑलराइट, कंचन सर आप टेक ओवर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू गौतम। एंड आई होप सॉरी सर, हाँ हाँ, हाँ, मैंने अनम्यूट कर दिया। सो आई होप मेरा आवाज इज लाउड एंड क्लियर एंड मेरा वीडियो भी चल रहा है। इन I'll be using a mixture of English and Hindi. तो किसी को कुछ इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो हिंदी में भी बता सकता हूँ। इन केस यू डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, आई कैन इवन स्पीक फ्रेंडली इंग्लिश. So in the first session we have completed AI, chat GPT and prompt engineering introduction. The agenda was first of all we have completed why we need data science AI applications. We have also seen how to use AI in Google, and I have shown you by a practical where you have used best AI corporate trainer in India, where I have shown you I have used AI competing with millions of organizations. In fact, the competition is between me and all top organizations in India and world, as well as individuals. So I have beaten everyone. Obviously, my only tool I am using is AI. That you have seen. What is Chat GPT? How does Chat GPT work? Applications of Chat GPT we have seen. What is prompt engineering? Prompt engineering techniques we have seen. Today we will be focusing primarily on two things: prompt engineering practical and Q&A session. So first of all, I'll tell each and everyone, make sure you have opened your prompt engineering practical, that is for Chat GPT. Hope you have created your login ID in Chat GPT, and everybody's login ID must be, if you have, the screen will be something like this. You will see I have already logged in. You also logged in. You can log in and make sure you are ready. The screen will be blank. My screen is, I have already written something, that is why it is there. But don't write anything now. You can in fact start maybe a generic prompt like, how are you? Just see, is it responding the intended way or it is not responding? Then you will come, I'll be showing you all each and every practical aspects. Before that, I will also want to show you, this is the Excel sheet which I have received from you all people. The objective was to understand your problem, but unfortunately, if I see in terms of prompt engineering, almost 80 to 90% has failed miserably. If you see the first prompt, the problem, what do you aspire
And what problem do you want to solve in your life? The problem could be anything, including your personal. The first, it was written job, my financial, and there is a spelling mistake also. Okay, I give it, no problem. And want to give big support to my family. This is, I am focusing all the wrong prompts. I will be showing you the right prompts also. Here, the robot or the chat GPT will not understand my financials. It can be 2 rupees or it can be $2 million. It does not know. And want to give big support. What type of support? Emotional support, financial support, health support. It is not clear. So the answers, if you ask the chat GPT using this prompt, the answer will be not the one you intended for. Will tell you, you can go for life insurance, you can invest in stock market, you can safeguard your family, you investing this. That is not what you wanted. So that means this is not the right prompt. We'll see the right prompt also. Okay, now next question. मैं अपनी family का situation बदलना चाहती हूँ. The ChatGPT also understands Hindi, in Hindi language, also in English language. तो ये prompt का जो आंसर होगा, पहले तो वो समझेगा नहीं क्या सिचुएशन, क्या सब क्या मोटे है, मोटे से पतला सिचुएशन में करना चाहते हो, ये पतले से मोटे, या तुम्हारा क्या हेल्थ का प्रॉब्लम है. इससे चैट जीपीटी या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से इट इज ए वेग जेनेरिक. Even human beings cannot tell what does this mean. Forget about the machines. And I will be all taking this in the end. Before starting this, I will be showing you the right and wrong prompt. Financial. What do you mean by financial? It has no meaning. It is just a generic. Even a human being will tell what do you mean by financial. Somebody's financial problem can be 5,000. Somebody will say 5 million, someone will say 5 billion. So this again will not solve the organization problem or even our problem. In the organizations, right now the salaries are going for prompt engineering is, if you see the salaries of Amazon, Netflix, it is going 7.5 crores. So understand properly, for this, they may not give you even 7.5 rupees. Why? That even a class 1 student probably will do better job than us. We are BCA, MBA, BTech, BBA. That is, the expectation is more than a class 1 or class 5 student. Money is everything for any problem. If you know everything, then you don't need any solution. You already know. So that means it will not, your prompt engineering, your robot will not even, will be full of confusion. How to be a start journey and what's don'ts to do and not to. The whole sentence does not make any to do, not for start a job. That means I want to do a freelancing. I am understanding. See, I have seen total students, out of the 80% students are TCS, Wipro, Infosys, Microsoft, JP Morgan. They're all managers, vice president. There I am, and 20% is university. This one does not make any sense. But freelancing, yes. With freelancing in YouTube, people are making millions and crores. The top earners today are 1%. PewDiePie, YouTuber freelancer, channel name is PewDiePie. That person is teaching video games. He is one of the top earners. No CEOs also. And if you convert it into crores, probably around 100 crores every month he is earning in Indian rupees. The other person is teaching toy. A kid, a 10 to 15-year kid is teaching how to. So that means even freelancing is more lucrative than a job. But the person who is doing freelancing must be very good in that job. How to create new application which will be helpful to the people here. Yes, new application can be done. What is the application? Do you want to help the medical
people or some health problem, or do you want to do some cooking issue, or do you want to make some AI through which financial investment can be simple? That must be clear. Here, none of the lack of money is the first to overcome. Okay, if you know, then what is the problem? Then the robot will tell, okay, you already know the answer. Then what you want from me? Be specific. I would suggest you can use, especially the management students, BBA, MBA. There is a specific term called SMART goals. Be specific. S means specific. M means measurable. It must be measurable. If you cannot measure yourself, nobody in this world can measure. By this date, I want to complete my studies in this by this week. That is measurable. If you don't say by this week, it can take even 10 years. It must be measurable, achievable, smart, SMA. It must be achievable. I want to reach the sun, inside the sun. Is it achievable? If you think yes, then okay. If not, don't write it, or make it achievable. Relevant. It must be relevant. If it does not make any relevance to you or to anybody in this world, then it is of no use. Are relevant. And the smart T is time bound. It must be time specific. That is a simple fast management. Even BBA and MBA, for this, even you don't require any management qualification. Everybody must be smart enough. Even your mobile is smart. That is why it is called smartphone. Why? Because it is AI enabled. Probably it is smarter than human beings in lot of cases. So these are financials for problem for my family. What is the financial problem? Is it 1 rupee problem or 1 million? Career. What is the career? It is just a generic. So so this all problem, this is a type of prompting which you have done, but almost all prompts are either wrong or nobody will even pay you 1 rupee, 2 rupee for this type of prompt. So we are at this condition. Our end goal will be to make the system, computer, as good as the best doctor in the world. Not in this session, ultimate goal. Make the system, GPT or prompt engineer, make it the best engineer in the world, best software engineer in the world, best answers, best thing. So this is the first I wanted to see, can you express or communicate yes or no? But yes, you are not able to even communicate to human being. Forget about. So now we are going to the prompt engineering practical, where I'll be showing you the wrong as well as the right prompt. Our goal in this practical is to demonstrate how properly engineered prompts can help us discover. To become a scientist, you can either discover or invent relevant information and knowledge effectively. Do you know what is the difference between, there are two types of scientists in the world. In the AI world, we call ourselves as data scientists. But do you know what is the difference between these two, discovery and invention? Yes or no? If yes, you can maybe chat and tell me. So at least I know what you are going to discover. Yeah. So, voice break तो नहीं हो रहा मेरा. Okay, respond. What do you mean by discover? There are scientists who discovered. So what is, you will be not discovering, मतलब खोज करना. ठीक है. No, my voice is very clear. Your voice is no. My voice is very clear. I am using a broadband connection also. I hope. See, let me see. Wait. Okay. Wait. Connection. Just wait.
Okay, now see, I am. Now see, is it better? Hello. Okay, now my voice is better, I think, right? Because I was yes. Oh, okay, perfect, good. Because I have two connections. Even there is a fluctuation in my broadband, the backup comes up. I'm using a broadband from Jio, and even the backup is the mobile backup, not my device mobile, that one dongle type, that one. Okay, so now it is good. Okay, discovery, in simple word, discovery, anything in this world इस दुनिया में जो ऑलरेडी है हमने ढूंढ के निकाला, that is discovery. Invention, that was already, yeah, right. Now so already existing. Yes. ठीक. Invention, जो कि हम कुछ something new, when we make something new, that is invention. Thomas Edison invention किया. Bulb was not existing before that Thomas Edison came. But India, country, river were already existing. Someone found out the era, this country or this river or something, or this mountain, that was already existing, but that person was the first person in the world who has found that. That is why उसको discovery बोलते हैं. हमारा काम है discover करना. We will now discover relevant information and knowledge effectively using prompt engineering. Is creating things by yourself, right? Astha Sharma, you are on the dot, is creating. Yes, that is right. Inventing is that. So now here, if you see, this is the individual and this is the robot, AI, ChatGPT, whatever. You never told me you knew that. This is you or me, we can be. This robot or ChatGPT or AI is telling you, never asked. That's it. How will I know? मुझे क्या सपने आएंगे जो तुम्हारा ये प्रॉब्लम है? तुमने कभी पूछा ही नहीं. You never asked me ये प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने कभी तुम्हें बताया नहीं. तो बात पूछो, ask me, then only I'll reply. Else I will not reply. तो ये है हमारा goal. So now let us take the first one. You have been hired by customer support. You can write this prompt. How can I help you? Probably this is not the right answer, wrong prompt. Or be very specific and instead provide detailed troubleshooting steps. Detailed, here I'm again specific. I could have written brief. Provide brief, then it would have given brief. Troubleshooting, I'm also specifying it is some problem I'm facing. Also give me in steps. मुझे step by step समझाओ, नहीं तो मेरे को समझ नहीं है. For resolving Wi-Fi connectivity issues. So I am so specific. Everything is clear. Now you write. First is how can I help you? Write in your practical. See what it is giving. Everybody write and see. Are you happy with this solution? The robot or the ChatGPT, this is the prompt. How can I help you is the prompt. This is the answer. See, your answer may be different. Are you happy with this answer? If you are happy, then okay. No need to go for right prompt. That is this is right. But you can ask me question, assist. Okay. So that means I am not happy with this answer. Neither I have been hired. I have been hired by a organization with a package of, this was the answer. So that was package for customer support, HCL, Wipro, TCS. If you are not happy, think customer support, your client will also know. Now you write, provide detailed troubleshooting steps for resolving Wi-Fi connectivity issues. Now write this and let me know. Are you satisfied?
or no? Provide detailed troubleshooting steps for resolving Wi-Fi connectivity issues. Detailed, I'm not written brief. Steps also I'm saying, I don't want some paragraph. Resolve Wi-Fi connectivity issues, connection problem is there, issues is there. And then tell me it is okay or wait, then tell me okay, wait. See, have you received this? Maybe something similar. Chat device troubleshooting. Here are the details troubleshooting steps. I have mentioned I want a detail. I don't want brief. I also need it in steps. I don't want in one paragraph. And I also want to resolve this issue. Check device connectivity. I checked. Still not problem solved. Restart your router and modem. Still not problem solved. Check Wi-Fi signal strength. Still not problem solved. Verify this password and this. No, forget and reconnect. Okay, maybe problem solved. Update network drivers. Okay, check for interference. Oh, probably reset router settings. Okay, connect. Even still 9th step, 8th step, we are not connect. Contact your internet service provider. Probably now I have to go there, else no need to go there. Check for hardware issues. Check for consult technical support. So this is the answer. If you are in customer support, you can give this answer. No need to work hard. Work smart. All the top people, CEOs, HODs, principal, director, all are smart people. That is why they are sitting at the top. Understand it. Hard working is good. Smart working is, first you have to do hard work, then only you can do smart work. And this is the smart work we are using now. So now we have solved a customer support problem. Let us keep going and see what is our next problem. Our next problem is food delivery service. It can be Zomato, it can be this prompt. You can write what food options do you have. Will it solve problem? After that, if you are not happy, then you write recommend 3 popular pizza flavors. Maybe 1, maybe 2, maybe 10. That is up to you. Recommend. Your customer is saying, this is what is happening in every food, McDonald's, KFC, Indian food outlet, foreign food outlet. You recommend. They want to see, can you help them as a food delivery service or customer support? Then you can tell, okay, these are the 3. You no need to have pizza knowledge and skill. I don't have. I even don't have medical knowledge. I don't have engineering knowledge, but I train the world's best engineers, software engineers, energy engineers, MBBS, MD, doctor. Why? I'm using AI. That's it. And that is what I'm communicating to them. Popular, here coming back to food delivery, popular pizza flavors with their ingredients. I also want their ingredients. A lot of people say, I don't want onion, I don't want chilies, I don't want tomatoes, and prices. I also want price. Probably you just tell me, has it given you the price? Yes or no? If it has not given the price in your go back to your practicals. Go back to your practicals. What food options do you have? I see here it is saying I don't have actual food, and since I'm just whether you are looking for, so that means it will not give you the right answer because this is very generic. Maybe, but when I say recommend 3 popular pizza flavor with the ingredient and prices, it says I can provide you with the names and typical ingredients for this, but I can't provide specific. Why?
Because you have to mention, you tell the prices in Delhi, India, probably then it will tell. Or you have to tell I am in Paris, France, probably then it will tell in that pounds or sterling. Or if you are in US, tell me in what is the price in California or in San Francisco or in Chicago, and I'm staying here, then it will tell. So that means you are going further deep and being further specific, but it does not know. It has said, I can help you with the popular pizza flavors. And again, I have not defined the destination, India, US, Europe, anything, but it has given a generic flavor which is loved in all over the world probably. But if you want to be more specific, then you have to also mention the country, the city, your personal choices, your budget, then it will also give you that. So that means more specific, more detail you are, the more specific, the more detail it will give the answers. That is why the organizations are ready to pay in millions. Margarita pizza, this has given pepperoni, this Hawaii pizza. For specific pricing, I recommend checking the local pizzerias, restaurant or online food. So it has not. But if you ask it, okay, you give me the average price in Delhi or in Europe or in Asia, or then it will also tell that. So I am using heavily. In fact, most of the companies are taking my assistance for training their customer support, writing email, building customer specific marketing campaign. I am teaching them marketing. I am teaching them customer support. How? I'm not a customer support expert. I'm neither a food delivery expert. I'm neither. The only tool I'm using is AI. That is all you need, and that is what you are learning. So let's keep going. Environmental engineering. This is a big problem where you have a lengthy article on a climate change and need to generate a prompt to summarize it. So that means you have already received a lengthy article from your client, maybe 100 pages, maybe 1,000 pages. But this report has to be submitted to the CEO. Nobody has 1 week, 1 month to read it. They want to read it in 2 minutes. What will be your prompt? Tell me. What will be your prompt for this? This is the problem. This is the problem. I'm going to, okay. I am speaking loudly only. Okay, there is, I think, okay, my connection is also perfect. I'm just checking and there is no backup. So now tell me, what is the solution for this problem? Okay, no, okay, voice is perfect. Okay, good. Thank you. What will be the solution? Tell me in the chat. Tell me in the chat. You have a lengthy article on climate change and need to generate a prompt to summarize it. So what is the solution? Do you have any solution for this prompt? For this problem? Yes, no, yes. Copy the climate change data, okay. And then ask ChatGPT to summarize in 400 words, okay. Good way. But this though you are using a third person, me. What will you write in the prompt engineering, in the ChatGPT? Write an efficient and detailed specific summary on the topic of, okay. Now you are picking up, wow. You are picking up.
Now discuss the impact of climate change on a specific region or ecosystem and propose an actionable. So, wow, you are now going more deep. Wonderful. To mitigate its effect. Wow. I am impressed. I am impressed. Because most of the time I see even managers and vice president had a hopeless answer. You are solving $1 million problem, be specific, make it the most powerful solution you have found out, discover it. It has all the answers. Good, good, good. So now I think I am enjoying, because when I see, I am also an AI implementation advisor for Google and Microsoft in a big project in India, even for the write the impact of climate and summarize with its effect. Okay, good, good. Now though, miss, in one day you are becoming a top class. Write about a climate change, some simple solution. Okay, if you're looking for simple to overcome the climate change, if the client is saying simple, then write simple. If the client is already has, see, if the client already has done all the experiment, then maybe simple may not, maybe your prompt must be, this is the secret. I give all my secrets to my students, even if they are 30 years experience. I will write, give me a solution which nobody in this world is still aware. Something I will write something out of the box, a prompt which nobody will find out. I know nobody is writing that. Maybe everybody will write, this is okay. You are doing a pretty good job. Provide me summarize of article of this lengthy guide on climate change. Okay, these are good. But understand is good. But if you want to be like the Olympic champion or world champion, then you have to be something different, no? Because everybody is writing this. See, I know how to do the analytics because I know everybody is doing this. I will do something different, and I'm again a winner. So most of the answers are good. So let us see the answer. So answer is summarize the key points. So I'm focusing. One is summarize, which the problem is there. Key points. So it means I don't want all points. There can be 100 or even 1,000 points. I want key points. Maybe it can be 10, 15, 20. I don't know. Let me see. Of the article, that means I will also paste the article. If you don't paste the article, it will not summarize. It will tell, I don't know. It will give something, some question or something may or may not be on climate. That means what I did, I am going to my this and summarize the key points of the article on climate change is up to here. And then I have pasted my article. See, climate is sometimes mistaken for weather, this, that. This I have just copied just from the Google and pasted it here. And let me see what it is. See, this article discusses the key points. See, I have not even read this. Now I know climate versus weather. Wow. Components of climate. Wow. See, this I have done it in 1 minute. They might have taken months or weeks or even years. Climate change definition. Okay. Impacts on agriculture. Wow. Climate is a big impactor in the agriculture field. Extreme weather events. Wow. See, now I'm becoming a climate change expert. Melting polar ice. This even I didn't know. So now I will speak to the top experts. What did you do with the melting polar ice? Everybody will be scared to talk to me. They even themselves don't know probably. I have now become the new expert in the climate change. See, understand it. See how? Again using AI. Human activity and greenhouse gases. What did you do in the greenhouse gases? Sir, we have done this, that, then. Why didn't you do this?
7 point, accelerated rate. In summary, I will now tell them the summary is a result of human activities, primarily the emission of greenhouse gases, primary emission. See, now I know. Probably they don't know, the experts. I am now the new champion, leading to global warming. Why didn't you work on this greenhouse gases? And such as extreme weather events, melting polar ice, disruptions of to agriculture. It's a pressing global issue that requires proactive efforts. Don't wait for an attack, for calamities, for earthquake, for this, that. What measures you have taken? Don't wait for the proactive effort to mitigate this effect. So now I have become an expert using my AI, ChatGPT, and prompt engineering. That's it. I have not even used my $1 million prompt engineering. That I will use when time. If my problem is solved using this, customer is happy, okay, give my fees, whatever we have discussed. I take fees based on 100% satisfaction. If anybody can do this, then do it from there. Else, our fees is this for 1 hour, for 1 day. Why? Because we are not training. I tell to every organization, I am not here to train you. I am here to solve your problem. Tell me what is your problem. That becomes the training. That is why TCS, Wipro, these all are ready to pay whatever you ask as a consulting. Let's keep moving. Find information on the history of the internet. Is there any solution for this problem? If yes, history of the internet. What does the history of the internet वो जानना चाहते हैं. अब क्या इसका क्या प्रॉम्प्ट, इसका कोई सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का, या हिस्ट्री क्या है? तुम गूगल में लिख लो, 10 लाख पेज आ जाएंगे, उसी वही हिस्ट्री है. फिर तो हो गया. टेल मी अबाउट द इंटरनेट. अरे ऑल सब फिर तो हो गया छुट्टी. They will not pay you anything. Tell me about the internet. Internet, it will tell anything and everything. It is not the right answer, probably. हो सकता है if you are happy, but the right answer is tell me about the internet. This is a wrong answer. Wrong answer. Say wrong prompt. Provide a brief history of the development and evolution of the internet. Tell me about the internet. This to maybe you just ask you can do I do a lot of experiments. Ask a 10-year kid. 10 साल का बच्चा से पूछो इंटरनेट के बारे में हमें बताओ. सीधा 10 साल का बच्चा, लड़का हो या लड़की, वो जाके सीधा यही लिखेगा. अरे यार, उसमें और हमारे में तो कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए. अगर कोई डिफरेंस नहीं है, फिर सोच लो भाई, फिर तो कोई पैसा भी नहीं देगा. उल्टा बोलेगा, you have just wasted our time, our problem is that. So now when you write, provide a brief history of the development. It will start from 1800, 1900, पहले क्या, second stage में क्या, फिर evolution क्या. So now let us go. Tell me about the internet. See the internet, see, it has given me the answer. You also write. Do it practically. I have done millions of practicals. Now you write, tell me about the internet and see for yourself. Is it the right network of network, worldwide reach, protocols, www, email, search engine, social media, e-commerce? Wrong answer. सर हमने तो बहुत मेहनत किया, 10 पेज लिखा, हमें तो वो नौकरी से निकाल दिया. और ये
मिस्टर एक्स ने तो पता नहीं एक पेज लिखा, उसको तो 25 लाख का पैकेज दे दिया, पता नहीं उसने एक पेज में क्या लिखा है, क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड, उसने ये लिखा। दैट पर्सन हु हैज बीन सेलेक्टेड, just one line, provide a brief history of the development and evolution of the internet. That person, 1950s and 60s, it started from there. See, MIT. Then 1960, ARPANET was born. TCP and email 1970s. Wow, 90 expansion and DNS आया। अब जो www.abc.com लिखते हो, क्यों लिखते हो? ABC तो यहीं से आ रहा है। Again, I teach software engineers, I teach the artist, so yeah, the technologist. ये अगर DNS ना हो तो no abc.com will work. It will, you have to write 1.37.53.99 तब जाके आता। कोई, nobody can remember that IP address. World Wide Web, commercialization growth 1990 से commercial growth, broadband and social media 2000s, then this came 2000 में present mobile, internet and IoT, ये सब 2010s में आए हैं। ongoing evolution, अभी 5G आ रहा है, 3G 4G 5G. This is the way where have just by writing one line, it can be a, earlier we used to write code, even coding it does. You can become the best coder in the world without writing a single line of code. That technique also I teach my student. You can be the best diagnose and curing of any medicine. Obviously, you will be using this. So this is the way. Tell me specific detailed history of internet in 10 key points with the dates and its evolution with computers. This is a good thing. This is a good. Sarthak Gupta, yes. So that means you are focusing on the customer specific problem. हमारा कस्टमर का प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम है, बस। बहुत लोग बोलते हैं सर मेरा कस्टमर तो मेरे को तो पहले दिन ही मेरे को बड़ा गालियां दे रहे थे, स्कोल्डिंग मी। मैंने बोला भाई वो तुम्हें बता रहा, तुम अपना नॉलेज बता रहा। दैट मीन्स discuss the evolution key in the history of the internet from its okay. So this is, that means you are further deep and deep. That means मैं तो when you are writing generic prompt, that is school level. You are making it more specific, then वो degree हो गया. You are making more specific, वो master degree. You are making it is very powerful, वो PhD हो गया. That means you are focused on the customer specific problem. That is all. Be a specialist. Don't be a generalist. General physician, जैसे डॉक्टर के पास वो जनरल फिजिशियन है, बट उससे 10 गुना 100 गुना ज्यादा कमाते हैं जो न्यूरो स्पेशलिस्ट होते हैं, जो आई स्पेशलिस्ट होते हैं, जो हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं। क्यों? बिकॉज उनको कुछ और से मतलब नहीं, दे वांट, सब ट्राई कर लिया, आप अब स्पेशलिस्ट हो, सो यू आर बिकमिंग द स्पेशलिस्ट, यू आर नॉट ए, देन वो प्रॉब्लम तो उन्होंने भी कर दिया। वो फ्रेशर, you will land your job with 25 lakh package तभी when ये तो 5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस भी नहीं कर पाता, ये तो BCA करके आ गया और ये बता दिया हमें सोल्यूशन। ये दिस पर्सन हैज डन बीटेक, फ्रेशर, सर इसको 3 लाख 6 लाख मत दो, इसको तो कम से कम 12 लाख का दो। अरे वो हम ही तो डिसाइड करते हैं सर, इसमें तो वो स्किल है, वो उसका, हम तो ये भी नहीं देखते हैं। आजकल तो यूएस के जो रिक्रूटमेंट चल रहा है यूएस एमएनसीज में, इंक्लूडिंग ओपन एआई, गूगल, ओपन एआई का वो सीईओ, गूगल का सीईओ, सब ने बोल दिया हमें तो भैया स्किल चाहिए, तुम अगर 10वीं फेल हो तब भी हम ले लेंगे, बट स्किल चाहिए। तो दिस इज द स्किल,
which you are exhibiting. Tell me the brief history of the internet. Ahmad Raja, tell me brief history of the internet. This is okay, but say use किया था. So you can tell brief history, but it is again a generic. Which why will they hire you for this? Just understand. They can for this, so they can hire a 10th student or class 5th pass also. No, that is the difference you have to make. See, understand it. If somebody is giving 10 lakh package, 12 lakh package, 25 lakh, that means they want 10 lakh का अगर तुम्हें पैकेज दिया, that means उनका जो प्रॉफिट होना चाहिए 1 करोड़. तभी तो तुम्हें 10 लाख 12 लाख का पैकेज देगा. अगर तुमसे भाई 1 रुपए भी नो प्रॉफिट हमें नहीं चाहिए, इसको निकालो. सीधे बात है. मैं तो आई हैव वर्कड ग्लोबली, यूएस में भी काम कर चुका, यूरोप में भी काम कर चुका, एशिया में. सो दिस आई एम टेलिंग बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस. ऐसे नहीं जो मैं वही पढ़ा रहा हूँ, बट जिंदगी में मैंने मतलब जिंदगी भर ही प्रैक्टिकल किया. सैन फ्रांसिस्को में प्रैक्टिकल किया, यूएस जर्मन के काम किया, ब्रिटिशर्स के साथ काम किया. एक्सप्लेन मी अबाउट इंडियन हिस्ट्री लाइक 10. Oh wow, so now you are going, which is very powerful. Darshan Jain, very powerful. That means what you are doing, you are now a teacher of class 5th student. उनको समझाना है क्या बोलते हैं, न्यूरो सर्जरी. अब न्यूरो सर्जरी, न्यूरो क्या होता है, ब्रेन क्या होता है. Then you will get, when you are saying 10-year-old kid, it will give you exactly like a 10. That means this syllabus or answer, you can straight away go in the class 5th and openly tell them. Everybody will enjoy. I'm telling you, everybody. Now, if you are going, how to identify the right prompt? See, there is no right or wrong prompt. Understand it. The right prompt is if you have understood you go back to the first session. There is a no right or wrong answer. It is fine tuning. It is giving example. It is focusing. It is being clear and specific. It is being smart. Sir, please explain in Hindi. हिंदी में ये है, इसका कोई राइट या रॉन्ग प्रॉम्प्ट नहीं होता है. सारे प्रॉम्प्ट ठीक है, बट अगर वो एक प्रॉम्प्ट जो क्लास 5वीं का बच्चा लिख सकता है, फिर वो तुम्हें क्यों लगेगा? हमें फिर बीटेक की क्या जरूरत है? हम तो 10 साल का बच्चों को ही ले सकते हैं, वो भी तो ये लिख देगा. तुम्हारे में, उसमें और मेरे में यही डिफरेंस है. You are using your knowledge and skill of whatever your age. अगर तुम्हारा उम्र है 18, 20, 25, that is the data you have accumulated. 10 साल के बच्चे में 10 साल का डेटा है, तुम्हारा उससे डबल है. तो तुम्हारा तो उससे बहुत डबल है, और मेरा तुमसे भी डबल है. और कहाँ से? From my experiences from the Sundarban to the San Francisco. Sundarban is the remotest village. San Francisco, स्टैनफोर्ड के साइड में रहता था. वो कैलिफोर्निया स्टैनफोर्ड का जहाँ यूनिवर्सिटी, उसके पास ही सेंटा क्लारा, वहां पर रहता है. तो दैट मींस हर जगह का एक्सपीरियंस है. तो मैं व्हेन आई एम टेलिंग, इट इज फ्रॉम प्रैक्टिकली इन यूएस मार्केट, इन यूरोपियन मार्केट, सब जगह मैं अप्लाई करता हूँ. जो भी प्रॉब्लम है मेरे को बताओ, मैं मेडिकल का प्रॉब्लम मैं बताता हूँ सोल्यूशन. सो सर, give me the information about the history and evolution. Okay, this is okay, but I will prefer something more specific. I like that one, 10-year kid. That is very powerful. A lot of prompt engineers use it. A lot of teachers are using it. A lot of professors are using it. In the education community, it's massively being used. Give me the prompt based on neuroscientist, based on 10-year kid. Means giving, that means I am going with specific. If your customer is coming, let's say automobile segment, then I will ask
based on the perspective of automobile customers. Wow. Explain me about history of internet and evolution where I can explain 100 people in simple way. It can be 100 people, it can be 1 people, it does not. In simple way, okay. What is the scope in future for lunch? As of today, the scope is 7.5 crore. As of today. So scope, I am teaching the villagers. This project is from Google. I am taking data from class 10th fail, remotest of village. They have to speak by just saying, now I'm working with Google where they have to see a mango and speak in their native language. No need of Hindi or English. Tamil, Telugu, Bengali, Kannada, they speak. I have completed. That means even they are being hired to generate data. Who does not know Hindi or English, Hindi भी नहीं आता English है, उनसे हम data generate करें, and they are paid very well. कम से कम 100 रुपए 500 रुपए पर घंटे तुम बस बात करते रहो, हम तुम्हें पैसे देते रहेंगे. ये प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं. दैट मीन्स क्या, ये तो मैं गांवों में कर रहा हूँ, तो ये भी वो गूगल इमेज वाला लेके आ रहा है, तो उसके लिए वो सब कर रहे हैं. माइक्रोसॉफ्ट, ये जो चैट जीपीटी इज फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, गूगल का अपना बर्ड है, वो सब अपने सब वो करे जा रहे हैं. हम सबको सपोर्ट करेंगे. So how can we think so specific? What are those factors? See, specific and factors are based on problem, customer problem. If your customer, obviously the biggest problem of the student community is student don't know any problem in this world. That is the biggest truth in the world. तो वो प्रॉब्लम ही नहीं मालूम तो सॉल्व क्या करेंगे? जब मैं कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज को पढ़ाता हूँ बड़ा इजी है. सर हमें ना ये प्रॉब्लम है, इसका क्या करें, इसका तुम ऐसा करो, तुम बताओ. सर हमें एचआर में रिक्रूटमेंट करने हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा किसको ले किसको नहीं ले, ये करो. सर ये क्या, कितने दिन टिकेगा, नहीं टिकेगा, ये तो नहीं टिकेगा, इसको मत लो, ये टिकेगा, हाँ ये टिकेगा. ये क्या कर रहा हूँ? आई एम यूजिंग एआई. और ये कितने दिन टिकेगा वो भी मैं बता दूंगा. ये 1 साल 3 महीने टिकेगा, और ये तो 6 महीने में ही छोड़ेगा. सर लो अब तुम देख लो. हाउ टू मेक लार्ज वेबसाइट यूजिंग चैट जीपीटी. in my 20-hour session I teach how to make the best website in 1 minute, how to make a video in 1 minute, how to make a image in 1 minute. That I will be sharing with Gautam and your. I teach everything. You whatever which is impossible for everyone, possible for me. One of the practical I have shown you in the beginning. Just write best AI corporate trainer in India. You will see my name. Others are spending millions of dollars. कौन? ISB, Stanford, तुम्हारा HCL, TCL, वो मेरे साथ कॉम्पीट कर रहे हैं, कभी नहीं जीत पा रहे. क्यों? मैंने तो भाई ऐसे रोबोट छोड़े हुए नेट में. I have using hundreds and thousands of robots. Let me see. SEO का तुम मार्केटिंग, तुम MBA मार्केटिंग कर रहे हो, स्पेशलाइजेशन तुम मेरे को दिखा दो. क्या तुम ऑन पेज ऑफ पेज SEO क्या? I will do it in minutes, which will take you 3 months, 6 months. The average money in the market is 25 से 30 हजार. हमारा वो कर दो, क्या डिजिटल मार्केटिंग SEO कर दो. मैं बोलता हूँ सब मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारा SEO सब कर दूंगा, तुम बस पैसे लेते रहो. What I'm using again AI. How to make large website? Yes, all that I teach. I will also show you some websites which you will not know. This is not created by human being, but it is better than the best web developers. Are we going to have your sessions of certificate through? Yes, you can approach the one session I do without zero coding, 20 hours.
and you will learn all the secrets of the world. And somebody wants to be also certified and also want to go deep in the coding, then I do 20 hours plus 20 hours. There I teach how to code anything and everything using Python. Python is the most simple language which I can even teach a class 5th kid, that is 10 years old. No need to learn Java, C, C++. That will take you, for example, 1 month, same, using C++, Java, or whichever. If it takes 1 month, I will do it in 1 day. It's open competition. कोई करके दिखा दे. So what I'm doing, obviously I'll be using Python. Python is more powerful. सब कुछ में वो it has beaten globally also. It is number 1 in the AI world globally. वो कहीं पर भी चले जाओ, US, India, Europe. So that means that session, ये अगर 20 and ये 20 करोगे तो मतलब I can challenge you. अगर तुम्हें 12 लाख का पैकेज नहीं मिला तो मैं ये सब छोड़ छाड़ के एकदम पहाड़ के ऊपर मतलब योगी का वो बन जाऊंगा, मतलब बैठा रहूंगा. तो मान क्या, that is not taught in any college, any school. कहीं यूट्यूब में भी नहीं लोगे. मैं यूट्यूब में मेरा कोई वीडियो नहीं होगा. नथिंग इज, कहीं फेसबुक में नहीं मिलेगा. बिकॉज व्हाट आई टीच इज नोबडी नोज इन दिस वर्ल्ड. दैट इज व्हाई माय कस्टमर्स आर ऑल निश कस्टमर्स. अभी एनर्जी क्राइसिस चल रहा है, वो निश कस्टमर आया. KPMG आया मेरे पास, कंसल्टिंग कंपनी. सर हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे. ऑल आर निश. That means they are all Fortune 500. So this is the way you have to solve the problem. Yeah. 1 minute, please. Okay, so I was in conversation with your coordinator. So any further session you can contact, but let us continue. More we complete now, because this is a syllabus which takes me 4 years. Degree is 4 years, master degree is 2 years. इतना time लगता है. But तुम्हारा ये तो just this is a glimpse. So now let us more we can complete. Whatever is remaining, we will complete later. So now you know, tell me, okay, now explain the concept of supply and demand in economics. See, I'm taking all your syllabus now. The complete syllabus is based on your concept of supply and demand in economics. This one, if you write, explain economics, very bad prompt. If you write, explain the concept of supply and demand. See, now I'm becoming more specific. Explain the concept of supply and demand in economics and its role in shaping market prices. Customer pain. अरे हमें तो पैसा उसी के लिए मिल रहा है. प्रॉब्लम सॉल्व करो. कस्टमर का प्रॉब्लम है, पेन है, वो ही नहीं सॉल्व हुआ. तुम्हारा नॉलेज, तुम्हारा डिग्री, तुम्हारा PhD एक पैसे भी नहीं देगा. तो हमें चाहिए कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा कि नहीं. एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई एंड डिमांड.
भाई सप्लाई एंड डिमांड से ही तो मार्केट का प्राइस बढ़ता है घटता है, शेयर मार्केट का प्राइस बढ़ता है, टमाटर का प्राइस बढ़ता घटता है, इसी के तो बेसिस में। अब यही नहीं लिखा तो क्या क्या तुमने क्या मैनेजमेंट क्या एमबीए, कोई फायदा नहीं। इससे तो अच्छा हमारा वो सब्जी वाला दुकान है वो नुक्कड़, उसको पता चल गया supply and demand in economics and its role in shaping market prices. That means I want to know the role in shaping market prices, then only my problem is solved. So let us now go and see. First I will write explain economics. See, very bad answer. Economics is the social science. ये तो scarcity, choice and opportunity cost. Problem is not solved. वो जितना भी कर लो सप्लाई एंड डिमांड, वो तो मालूम है, मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम, प्रॉब्लम नॉट सॉल्व। मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो, ये तुमने फॉर थ्योरी नंबर लाने के लिए ठीक है, वो 2-4 नंबर मिल जाएंगे, बट रियल वर्ल्ड में दिक्कत आ जाएगा। अब इंटरनेशनल ट्रेड, लेबर, ये सब बहुत अच्छा नंबर मिल गया। अब बताओ, अब ये है रियल वर्ल्ड। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई एंड डिमांड इन एंड इट रोल्स इन शेपिंग मार्केट। अब ये डिमांड, here's a breakdown the key components of supply and demand में ये these are the factors, supply में these are the factors, equilibrium में वो दोनों का इक्विलिब्रियम रखना है, देन जैसे शिफ्ट्स इन सप्लाई एंड डिमांड किस तरह से हो रहा है, वाओ, इम्पैक्ट ऑन प्राइस, ये हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कस्टमर का, इम्पैक्ट ऑन प्राइसेस में। यार हमारा तो जब टमाटर का प्राइस है 250 रुपए, लॉट ऑफ वेजिटेबल सेलर्स हैव बिकम करोड़पति। वही करोड़ जो इनको थोड़ा भी नॉलेज था, नहीं तो वही रोना धोना। दैट मीन्स ऑल स्मार्ट वर्क के वजह से वो करोड़पति हुआ। ये नहीं जो भाई हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क तो सभी करते हैं, मैं भी करूंगा तुम भी करोगे, बट उसके ऊपर तो थोड़ा स्मार्ट वर्क। इम्पैक्ट ऑन प्राइसेस ये रहा, कस्टमर को दे दिया, उसको बताने की जरूरत नहीं तुमने कैसे किया। That customer is not bothered. You have taken it from ChatGPT, prompt engineering, AI. Nobody cares. The customer only cares उसका problem solve हुआ नहीं हुआ। Is the problem solved? Yes, yes. ये रहा problem, ये है solution, आप कर लो। मेरा consulting charges per day 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, लो ये लो बस। बाकी एक दिन काम करो, 29 दिन आराम से बीच, माउंटेन, फॉरेस्ट में घूमते रहो। किसने बोला तुम्हें हार्ड वर्क करने का? सो दिस इज द वे, दिस है, प्लीज यूज इट फॉर टेक्निकल प्रॉब्लम। एवरी सी देयर आर hundreds of technical problem. How will I mean to make it do some technical? This is technical stuff only. Don't explain the OSI model, technical stuff, especially for computer specific. Use it for technical part. Technical part, see, these are also technical. Technical does not mean you have to hold your screwdriver or software engineer. Any problem you are solving in the market is all technical problem. That is why they are hiring you. MBA, it can be BTech. So don't distinguish between technical में, हाँ, if I workshop में जाऊंगा तभी टेक्निकल, अगर मैं टेबल चेयर में बैठ के एसी में, वो टेक्निकल है। दैट इज ऑल्सो टेक्निकल। इफ यू आर सॉल्विंग ए टेक्निकल कोडिंग प्रॉब्लम, सी अगेन दिस इज, आई एम नॉट 1 hour में आई कैनॉट गो डीप, बट द कोडिंग प्रॉब्लम व्हेन आई डू the coding problem, I'll be, because it will take another 1 hour. Coding problem, for example, I'll now speak based on some technicalities. Let me see, can you understand? Yes or no? Probably most of the things probably you may not even understand because you have never faced any problem in life. In the AI world, there are 2 technical problems. Listen carefully, especially the people who are thinking technical. Everything is technical. There are 2 problems. One is yes or no. When the answer is given in yes or no, will I pass or fail? You solve it through coding. No. Okay, supply and demand is one. Okay,
A supply and demand is also, I am using a yes or no. Yes or no can be used in supply and demand also, pass and fail also. And this is the biggest problem which is being solved in the AI world. I will use only two words. One is, in the technical term, we say regression problem and classification problem. Classification problem is, will I pass or fail? Tomorrow will be rain, and this we do it through coding. That I teach in the full length in my 20-hour session. Will tomorrow be rain or sunshine? Yes or no? This is called classification problem. Will the flood be above red or the below red? Classification problem. Will I pass or fail? Classification problem. Understand, this is the biggest problem in AI. If you are technical, it is applicable for whole world. These two problems, even for your current life, current education, you will tell your first problem is, will I pass or fail? Now I'm talking based on the student's point of view. This is called classification problem, and that is solved through coding and without coding also. Both, I will show both. Second is, if I pass, if the demand is there or if the supply is not there, same is applicable everywhere. Will I pass? So how much marks will I get? This is called regression. In the AI world and the whole world, 80% of the problem you can solve. How much marks will I get? That means I will tell, based on AI, you will get 73.5. What I did, I used the regression problem. Tomorrow, market will go up or down. I will use, this is a technical problem in the economics world. The market will go up or down. I will say, using my AI, the market will go up. Okay. Everybody take their positions up. All investors, economists, everybody will. The next question they ask, sir, when will I sell it off? It will go up till how much? Then I will tell, it will go up to 23% up. Here I'm using regression technique. So this is the way we solve any and 80% of the problem I'm telling. Remaining 20% is highly specialized. That also I teach. In this, if you have understood regression and classification, you can solve 80% of the technical world problem, including management, including engineering, medical, anything, environment. And this is the way I think we are. Wait a minute. Okay. So, okay, I think we are done for today, because these topics are huge and lengthy. It has taken me 10 years to understand the AI world and 20 years of the real world. So this was just a basic understanding of the AI, ChatGPT and prompt engineering. And further, if anybody want to understand anything to solve, I'm talking technically, any problem, we use 80% of the technical problem will be solved. If you tell, I want to use code, then I do it through this coding, Python. If you tell, no, I am not interested in coding, most of the top management, nobody is interested in coding, including the non-technical people. So then I do exclusively using ChatGPT and prompt. That there the code is written by the ChatGPT. I just tell, write this goal. What I do, I am solving a regression problem in the demand and supply of the market. You please give the code, and I also give the data.
and the data is here. Tell me, will the market be going upwards or downwards? Based on the data of the last 6 months, 1 year, 5 year, 10 year, it tells me tomorrow it will go up. That is all I have done. So that means that I teach in this regression and classification 80% of the problem. And then I also tell them how to do it with coding, without coding. This all you can do. And this is just a beginning of your journey. So hope you have at least taken your first step, and it is the best thing in your life if you take this decision, because this will help any and every problem to solve. I solve everybody's problem. So that is my passion and this. So I would in fact hand it over to Gautam. Gautam, if you are hearing, please take it over, and then is it dangerous? Sir, is it dangerous to provide some information? ChatGPT, whatever you are giving ChatGPT, it is all being saved. So OpenAI has already said, if you give your name and every address, that is also saved. So it is up to you. It is up to you. It is not dangerous. Why it is dangerous? And if you think you are doing something bad thing, then it can be dangerous. I do it for education purpose, scientific purpose, marketing purpose, technical purpose. So it is not dangerous. And like project details, whatever project you do, it will only help. No, nothing to worry. I do also cyber security. I do a lot of things. So it is, you are already have given the data to Google. Don't think that your data is not there. You just tell me, I can extract the data from Google also, Facebook also, YouTube also. Even your ChatGPT is based on there only. Don't think that this data is coming from some new. This data has come from the social media, Google, everywhere. But now I'm helping the Microsoft and Google to take legal data from the market. So that also. So yes, Gautam, are you there? So maybe you can. Yes, sir. Yes, sir. I'm there. Yes. So. All right. Thank you so much, sir, for such a wonderful session. And I think students ने काफी कुछ learn करा होगा. So, guys, let's say a proper thank you to the sir, and we'll be looking forward to organize such kind of sessions in the future as well. Yeah. Thank you. I have. Thank you so much, sir. Teach. I enjoy with the students very much. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. हाँ guys, you can stay here, and अगर आप लोगों को कोई questions है, आप लोग यहाँ पे डाल सकते हैं chat box में, and maybe related to the session or not. अगर session से जो related questions होंगे वो मैं भौमिक सर को share कर दूंगा, और अगर कुछ unrelated questions है session के मतलब session से related नहीं है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, because आपका 8:30 पे दूसरा certification start होने वाला है. Okay, thank you. I'm leaving. I have another meeting. Yeah, sure, sir. Thank you all. Had a wonderful time. Hope you had also. Thanks a lot. Thank you so much, sir. अच्छा, एक काम करते हैं, आप सब लोगों को मैं माइक का एक्सेस दे दूं क्या? शोर तो नहीं मचेगा? ठीक है. ऑलराइट, मैंने आप लोगों को माइक का एक्सेस दे दिया है. सो आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, बिकॉज आपका 8:30 पे सेशन स्टार्ट होने वाला है. आई थिंक फॉर 2022 बैच के लिए AI और ML का आज पहला क्लास है, एंड 2023 बैच के जो स्टूडेंट्स हैं उनका C प्रोग्रामिंग पे आज पहला सेशन है. सो आप लोग जो है थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, एंड देन 15 मिनट्स में आप लोग जो है. जस्ट 1 मिनट सर, 2023 वाला बैच का ML है कि C++ है? C है. C है 2023 वाला बैच का. हाँ, 2023 का C है, और 2022 के लिए AI और ML है. टेल समथिंग अबाउट नेक्स्ट सेशन फॉर दिस. अभी तो बेसिकली, अच्छा मुझे एक बार ऑनेस्टली बताओ सारे अभी यहाँ पे कॉल पे, कि आप लोगों का सेशन को लेकर एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब जेन्युइनली कुछ सीखा? बिकॉज ये एक तरीके से कहते हैं ना कि एक टीजर टाइप था कि आगे और सेशंस में क्या होने वाला है. सो ChatGPT को आप इफेक्टिवली किस तरीके से यूज कर सकते हो, उसका थोड़ा सा एक टीजर था. इस पे हम और भी सेशंस आगे कर सकते हैं. सो क्या ये आप लोगों को लग रहा है वर्थ इट है और करने के लिए?
यस सर लग रहा है। फ्यूचर चैट बॉक्स में लिख दो, प्रोस्पेक्टिव चैट से बॉक्स में लिखो, हाँ लग चैट रहा बॉक्स है। में लिखो, हाँ चैट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स में लिखो, वहां से पता चलेगा। ठीक है। हाँ आई कैन सी दैट अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन है चैट जीपीटी के बारे में या फिर यूज करा हुआ है, तो उन लोगों को ये बिल्कुल बेसिक लगेगा और इसमें कोई हैरान होने वाली बात नहीं है। हाँ अगेन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को और डीप डाइव मे बी जो है सर शायद नहीं बता पाए अभी, बट आई थिंक कि फ्यूचर में जो है वो थोड़ा सा और इसको बेटर तरीके से हम डीप डाइव करेंगे। अच्छा कितने लोगों को पता है कि चैट जीपी को आप एक रोल भी प्रोवाइड कर सकते हो? चैट में लिख के बताओ कितने, किसी को आइडिया है कि चैट जीपीटी को आप एक रोल भी दे सकते हो ताकि वो बेटर और प्रॉम्प्टिंग कर सके? हम्म। ठीक है, सो इस तरीके से जो है वो थोड़ा सा, हाँ फॉर एग्जाम्पल चलो मैं आप लोगों को यहीं पे थोड़ा सा एक बार हल्का सा इसके बारे में बता देता हूँ ताकि आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का और अच्छे से आइडिया हो जाए। सो वैसे तो बहुत ही सिंपल है इसको, यानी कि चैट जीपीटी अगर आप ओपन कर रहे हो, सो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, उससे क्वेश्चंस पूछने से पहले आपको उसको एक रोल दे सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते हो एक्ट एज ए, मे बी यू नो क्या लिखे यहाँ पे रोल, एक्ट एज अ, इंटरव्यूअर लेंगे जैसे। हाँ हाँ एक्ट एज अ वेरी गुड एग्जांपल, एक्ट एज अ इंटरव्यूअर एंड एक्ट एज अ इंटरव्यूअर हु इज इंटरव्यूइंग fresher for मे बी लेट्स से टेक्निकल लिख रहा हूँ मैं अभी, आप कुछ भी लिख सकते हो, टेक्निकल रोल्स, यू नीड टू आस्क मी relevant questions around the interview so that I can prepare well and guide me if my answers are right or wrong. सो आप इसको इस तरीके से प्रॉम्प्टिंग करते हो, मतलब बहुत सारी टेक्निक्स होती है। जैसे देखो ये कुछ इसने टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स के अराउंड पूछ दिया। अब मैं जो बोलना चाह रहा था वो ये था कि तुम प्रॉम्प्टिंग देखो मैंने सही नहीं करी है। एज अ इंटरव्यूअर हु इज इंटरव्यूइंग फ्रेशर फॉर टेक्निकल रोल्स यू नीड टू, लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक राउंड विच इज नॉट टेक्निकल। हाँ टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अब आप यहाँ पे लिखोगे जैसे माय नेम इज गौतम, जो पहला क्वेश्चन है। सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो वो इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से पूछ रहा है। तो वेयर डू यू सी, ये जनरली क्वेश्चंस होते हैं जो कंपनीज जो हैं बेसिकली पूछती हैं फर्स्ट राउंड में। सो आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो कि माय नेम इज गौतम एंड आई लव टू प्ले लेट्स से बैडमिंटन। यहाँ पे आप लिख सकते हो और पूछ सकते हो इज इट ए गुड एनफ आंसर, ऐसे लिख सकते हो तो आपको ये बताएगा यहाँ पे। That's a good start, but interviewer setting is often helpful. Provide a little bit of more detail, better understanding background and motivations. For example, देखो इसने इसका एग्जाम्पल रिस्पॉन्स दे दिया। सो ये पूरा ना एक इंटरव्यूअर के पर्सपेक्टिव से जो है चीजों को देखकर मतलब सब बताता है। सो दीज काइंड ऑफ टेक्निक एक्चुअली हेल्प्स यू टू एक्सट्रैक्ट अ बेटर रिस्पॉन्स फ्रॉम चैट जीपीटी। सो ये छोटा सा एग्जाम्पल था। इसमें बहुत सारी और टेक्निक्स भी होती हैं जिससे आप इफेक्टिव तरीके से उस टूल को यूज कर सकते हो। और ये सिर्फ चैट जीपीटी तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये बेसिकली आपके और भी टूल्स हो गए, एआई टूल्स जैसे मिड जर्नी हो गया या और भी वीडियो एडिटिंग या बहुत सारे टूल्स हो गए, उनके लिए भी रेलिवेंट है टेक्निक। सो आई थिंक कि आई गॉट द आंसर कि ये होने चाहिए आगे और नहीं होने चाहिए। लेट्स सी कि हाउ वी कैन प्लान इट। ठीक है, और कोई क्वेश्चंस है क्या आप लोगों के? तो सर अगर, हाँ जी, जैसे कुछ कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स होते हैं तो उसमें क्योंकि इसका डेटा अलग अलग सोर्सेस से आता है तो आंसर बायस्ड भी हो सकते हैं और जरूरी बिल्कुल नहीं हो है उन सकता पे है, भरोसा किया जा सके। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप इससे पूछोगे कि आपको क्या अच्छा लगता है प्लेयर, मतलब एक लिंडन बैडमिंटन का प्लेयर अच्छा है या ली चोंग भी अच्छा है। सो जो डेटा इसके पास है वो ऑलरेडी वहां से आ रहा है जो इंटरनेट पे ऑलरेडी पड़ा था, सो वो बायस हो सकता है।
बिल्कुल हो सकता है, आप भरोसा और नहीं कर सकते। सर जैसे हिस्ट्री के बारे में भी हो, अलग अलग कंट्रीज में हो सकता है कि एक ही इवेंट के बारे में अलग अलग चीजें बताई एब्सोल्युटली, गई हो, बिल्कुल हो तो सकता है। फिर ऐसी चीजों में इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता, नहीं या फिर बट इसकी ये, हेल्प कैसे लें? हाँ, ये जो चैट जीपीटी और ये जितने भी एआई टूल्स हैं, ये बेसिकली आपको एक, मतलब क्या कहते हैं, एक फर्स्ट इंप्रेशन या फिर एक उस चीज का फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग देने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ जो है आपको अपना दिमाग भी यूज करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो इसने एकदम से लिख दिया, उठा के आप उसको वहीं पे एकदम डाल दोगे। अभी तो बेसिकली आप ये समझो कि जनरेटिव एआई के वर्ल्ड में शुरुआत हुई है। आगे जो टूल्स आएंगे और ज्यादा, वो अभी मे बी 2 साल बाद, 3 साल बाद इसके जीपीटी का 4.5 5 6 ऐसे वर्जन्स जो आएंगे, वो और ज्यादा मतलब डिपेंडेबल होंगे। ऑफ कोर्स आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कि डेटा जो है वो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो ये बायस हो सकता है। सो हाँ, वो हो सकता है, उसके साथ साथ आपको अपना दिमाग भी यूज करना है। इस पे एकदम से भरोसा नहीं करना। सर और सर प्रोजेक्ट प्रॉम्प्ट सब। इंजीनियरिंग में चैट जीपीटी के अलावा और क्या क्या है अभी करेंटली प्रॉम्प्ट जो इंजीनियरिंग मेजर जो है, सीखने के लिए? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोई ऐसी वो चीज नहीं है, टूल डिपेंडेंट इतनी चीज नहीं है। वो बेसिकली आप ये समझो कि कोई भी एक एआई टूल है, जैसे चैट जीपीटी क्या है, आप उसको टेक्स्ट के फॉर्म में देते हो, वो उसी तरीके से जवाब देता है। आप किसी और टूल को इमेज के फॉर्म में डेटा दोगे तो वो उस तरीके से जवाब देगा। सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज नॉट टूल स्पेसिफिक। ये बेसिकली एक टेक्निक है कि आप एआई टूल से किस तरीके से इफेक्टिवली बात करते हो। जैसे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, तो आपको मेरी बात प्रॉबेबली समझ आ रही है, या फिर आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो वो समझ आ रहा है मुझे। सो इट्स अबाउट कि आप इफेक्टिवली क्वेश्चंस कैसे पूछते हो ताकि मुझे समझ आए कि मुझे रिस्पॉन्स क्या देना है। तो ये बेसिकली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब है। इसके अंदर और भी 2 3 चीजें होती है। इनफैक्ट आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं खुद इस चीज पे भी रिसर्च कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली वो और क्या है इसके अंदर, और क्या क्या सीखने लायक इसके अंदर, जिसकी ट्रेनिंग्स जो है हाँ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा पाऊँ। सो अभी तो ये थोड़ा सा एक इस तरीके से सेशन था, इंट्रोडक्शन टाइप ऑफ अ थिंग। एंड जो आपकी फैकल्टी है इज क्वाइट एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, एंड विल ट्राई टू गेट सम मोर सेशंस फ्रॉम हिम एज वेल इन द फ्यूचर। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। सर प्रोजेक्ट सबमिशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था। हाँ पूछो। जैसे एडवांस एक्सेल का जो है प्रोजेक्ट हम लोग पावर बीआई में सबमिट कर सकते हैं? हाँ, आपका एडवांस एक्सेल के अंदर पावर बीआई हुआ था ना। यस सर। हाँ, तो आप कर सकते हो। अच्छा, एक चीज और, आपके प्रोजेक्ट सबके चेक हो गए हैं, और ये भी डिसाइड हो गया कि किसको सर्टिफिकेट मिल रहा है और किसको नहीं मिल रहा है। सो आप लोगों के पास ईमेल्स आएंगे। अगर ईमेल के अंदर सर्टिफिकेट हुआ तो खुश हो जाना, नहीं तो ईमेल के अंदर फीडबैक होगा कि क्यों नहीं दिया गया, या फिर क्या रीजन है, क्या कमी रह गई। सो वो एक बार आप लोगों को मिल जाए, देन आप उसके साथ बाद मुझसे कनेक्ट कर सकते हो एक बार। ओके सर। सर और हाँ, एसक्यूएल का प्रोजेक्ट कैसे सबमिट करेंगे? हाँ, यू आस्था, यू कैन लीव फॉर योर नेक्स्ट सेशन। 8:30 पे सेशन है, यू गाइस कैन डेफिनेटली लीव। एसक्यूएल का सेशन जो है वो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, आप लोगों ने अलग अलग क्वेरीज पढ़ी है ना। सो यस सर। आप एक डेटाबेस के अंदर से, लेट्स से कोई भी एक एग्जांपल उठा लो, उस डेटाबेस के अंदर से कुछ क्वेरीज चला के डेटाबेस फेच करके मतलब दिखा दो, डेटा फेच करके दिखा दो उसके अंदर कोई भी हाँ एक। सर, एक डेटाबेस बना के फिर जो जो क्वेरी सीखी उन सब पे एक एक, यस, मतलब जो भी बिल्कुल सीखे हैं क्लॉज और सब, उन पे एक एक क्वेरीज चला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही सर करना है। ओके। और उसको सबमिट कैसे करना है? जो मतलब क्वेरीज गिटहब है, पे तो सर गिटहब पे तो लेगा नहीं उसको, नहीं फिर क्यों, आप गिटहब प्रोग्रामिंग। को, हाँ गिटहब को मतलब एसक्यूएल आप फाइल क्यों नहीं डाल सकते, गिटहब पे डाल सकते हो। एंड सेकंड थिंग, इतना इंपॉर्टेंट मतलब 30% इंपॉर्टेंट आपका सबमिशन होता है, 70% आपका वीडियो होता है, बिकॉज सबसे पहले हमारी टीम जो है वो वीडियो चलाती है। तो ओके सर। वीडियो में अगर हम देखते हैं कि उसमें आप बता रहे हो कि देखो मैंने एसक्यूएल क्वेरी चलाई, इससे ये हुआ, वीडियो आप जितना अच्छा बना रहे हो उससे आपके चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं सर्टिफिकेट मिलने के। क्योंकि अगर वीडियो में बंदा सेटिस्फाई हो जाता है तो वो आपकी फाइल्स इतना ज्यादा नहीं खोलने जाता टीम वाला। मैं आपको एक्चुअल अंदर की बात बता रहा हूँ जो टीम वाले करते हैं। सो अगर आप वीडियो अच्छी बना रहे हो, उसमें दिखा रहे हो प्रोजेक्ट का आउटपुट कैसा आ रहा है, तो वो फिर एक बेटर मतलब हो जाता है हमारे लिए पैरामीटर जज करने के लिए, आपको सर्टिफिकेट मिलना नहीं चाहिए। सो अपना सारा एफर्ट वीडियो में डालो, इसको इस तरीके से देखो कि आप किसी को बता रहे हो ये मैंने बनाया है, ये ऐसा आउटपुट दिखता है, ये क्वेरीज है, ये सब कुछ है। तो उससे समझ आता है कि हाँ भाई इसने करा है। और अगर वीडियो में समझ नहीं आता तो फिर टीम वाला बंदा जाता है, वो आपका प्रोजेक्ट ओपन करता है, अगर वो समझ आता है चलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो वहां पे लाल मार्क कर देता है, रेड मार्क कर देता है कमेंट ड्रॉप करके। तो वीडियो पे थोड़ा सा एफर्ट डालना। ड्यूरेशन कितना होना चाहिए वीडियो का? 5 मिनट आई थिंक काफी होता है यार। वैसे तो 5 मिनट भी ज्यादा है, 3 मिनट के अंदर आपको ओवरव्यू देना होता है, मेरा नाम ये है, मेरा कॉलेज ये है, मैंने प्रोजेक्ट में ये बनाया है, मुझे इंस्पिरेशन यहाँ से मिली है, ये क्वेरीज हैं, और मुझे ये चैलेंजेस आए हैं।
बस। सर ड्राइव का लिंक वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं? हाँ, ड्राइव का लिंक दे देना, बिल्कुल ड्राइव का लिंक ही दोगे या फिर यूट्यूब का किसी का भी दे सकते हो। और सर क्लास वर्क अगर उतने अच्छे से सिस्टमेटिक हमारे पास नहीं हो तो? क्लास वर्क जितना है आप उतना दे दो, बिकॉज द थिंग इज कि यहाँ पे मेन जो पैरामीटर है आपको सर्टिफाई करने का वो आपका वीडियो है, बाकी सब चीजों का परसेंटेज कम है। ओके सर। तो ठीक है। सर मेरे पास अवेलेबल नहीं है क्लास वर्क का जो था वो सर डिलीट क्योंकि हो चुका जैसे है। पावर बीआई का मेरे लिए भी थोड़ा टफ था, तो फिर मैं उसको साथ में करने की जगह सिर्फ सुनने पर ध्यान दे रही थी और समझने पर। हाँ, सो उससे इतना प्रॉब्लम नहीं है, जैसा कि मैंने कहा अपना एफर्ट मैक्सिमम जो है वो प्रोजेक्ट पे डालना, राइट, और उसके वीडियो पे डालना। बाकी सारी चीजें जो हैं वो एक बार को थोड़ा सा, चलिए मैं ये कहता हूँ कि उसका मतलब प्रायोरिटी या परसेंटेज नहीं मिलेगा। लेट्स से मैंने 10% हमने स्कोरिंग रखा हुआ है कि प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, 10% होना चाहिए कि पूरा गिटहब मेंटेन होना चाहिए, तो वो 20% आप लोगों को नहीं मिलेगा, लेकिन 80% चांस तो है ना कि सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो उस पर ध्यान दो। ओके सर। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके, सर वेलकम कल गाइस, ही चलो। लास्ट लास्ट डेट है ना सबमिट करने का? हाँ, कल ही लास्ट डेट है, बिल्कुल। तो सर मेरा एग्जाम चल रहा है, फिर मेरे लिए तो प्रॉब्लम है। तो फिर एक काम करते हैं, कब खत्म होगा आपका एग्जाम? कल लास्ट एग्जाम है, उसके हाँ, तो बाद मैं फिर काफी बनाऊंगा। स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट यही आई थी, तो लेट्स डू वन थिंग कि आप लोग जो है वो मंडे तक का टाइम ले लीजिए, बट मंडे को ओके हम सर। डेडलाइन इसकी क्लोज कर देंगे। ओके क्योंकि हमारी सर। टीम क्या करेगी, जो आप जिस टाइम पे सबमिट करेंगे ना वो टाइम स्टैम्प आ जाता है, वो आते ही पहले फिल्टर लगाएगा कि जो मंडे वाली डेट है उससे बाद के जितने सबमिशन है वो हटा दो, तो वो हट जाएंगे, तो कोई पॉइंट नहीं है, तो मंडे तक मैक्सिमम कर देना। सर ओके मंडे सर। पूरा दिन है ना मंडे का? मंडे रात 11:59 PM तक। यस सर। ठीक है। ओके। ओके। चलो, बाय। फिर अब दूसरी क्लास में ज्वाइन होगा। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, जाओ जाओ, बाय बाय।